So I'm so happy sharing this news with all of you. Great achievement for me, and I'm so grateful to all of you for showering love and blessings and making this family so big in a very short period of time. So I really wanted to use this platform to share some of my learnings, and people are reaching out to me with so many questions. One question people often ask me, so I thought to just share with you that what is inside, what is my opinion about that. So I've been getting this question that how to handle those feelings of doubt or insecurity when you see someone is achieving massive success in his life. तो somebody who have started the journey maybe close to you, आपके साथ ही शुरू करी है उसने journey. Now he is performing so well, or you are seeing him achieving so many good successes in his life. So maybe you felt a little that you are not enough because you have started the journey alongside, and this person is reaching so high. Why not you? और मे बी समटाइम्स यू कीप इग्नोरिंग दैट पर्सन कि भी उसे देख के मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट पर्सन और नॉट सी कि वो क्या कर रहा है, बिकॉज उससे मुझे थोड़ी सी डीमोटिवेशन होती है. सो बट स्टिल जब ऐसा स्पेशली आप किसी को इग्नोर करते हो तो वो बार बार आपके सामने आता है. मे बी यू गेटिंग सम कॉल्स फ्रॉम दैट पर्सन, और कोई जो भी आपके घर में रिलेटिव्स आ रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं. तो जितना आप किसी को इग्नोर करते हो, इट हैपन्स वेरी ऑफन कि वही आपके सामने बार बार आता है. तो ये भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि कैसे फिर इसको अवॉइड करें, स्पेशली जब you really do not want to listen more about that person. So I would say that it is all about it's all about the perspective कि आप किसी चीज़ के बारे में कैसे सोचते हो. Okay, so this perspective is something which is a game changer. So here I would say that instead of feeling bad, instead of feeling insecure, instead of criticizing yourself कि I'm not good enough, मे बी मुझ में ही कुछ कमी है जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, एंड दैट पर्सन इज डूइंग सो वेल, तो उसके पीछे रादर थिंकिंग अबाउट दैट यू कैन मे बी चेंज योर थॉट दैट यूनिवर्स इज गिविंग यू सम मैसेजेस. Okay, so universe is conspiring something for you, that hey, look, if that person can do, then you can also do. Okay, this is a very beautiful, very simple yet very powerful message if you truly believe that. वो बार बार थॉट आपके माइंड में आ रही है या बार बार वो पर्सन आपको नजर आ रहा है, इट मीन्स देयर इज समथिंग, सम हिडन मैसेज फॉर यू. दैट पर्सन इज सेटिंग अ बेंचमार्क फॉर यू and maybe giving you a tailored path also, that how you can grow in your life. So this small shift, it's called mind shift. जैसे कोई नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आए, शिफ्ट इट इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे, योर ओन क्रिएटिव वे, राइट. कि कैसे इतनी छोटी सी थॉट से इट गिव्स यू एनर्जी बूस्ट. एक तरफ आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे थे कि यार मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मैं मेहनत ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट डिजर्व दिस होल सक्सेस, और एकदम से यू आर सेइंग दैट वाओ वंडरफुल, I really want to bless that person. He's showing me that path, and thank you so much, universe, for showing that person. Maybe you're giving me some direction. So now I'm going to be feeling more powerful. Maybe reach out to that person. और उसे अच्छे से ऑनेस्टली ट्रूली उसे ब्लेस करो, एंड मे बी यू कैन आस्क फॉर द टिप्स ऑल्सो रादर देन अवॉइडिंग दैट पर्सन. बिकॉज वॉट आई पर्सनली बिलीव कि जितना आप किसी चीज़ को अवॉइड करते हो ना, उतना ही ज़्यादा वो आपको दिखने लग जाती है. सो इनफैक्ट आई रियली वॉन्ट टू शेयर विद यू, एक मैं इंटरव्यू देख रही थी अक्षय कुमार का, ही इज़ अ बिग सेलिब्रिटी हिमसेल्फ. तो समबडी वॉज आस्किंग हिम कि आपसे ज़्यादा जब लोग चार्ज करते हैं फिल्मों के लिए, don't you feel bad because you are so successful, so popular, you are a star, और जब कोई और एक्टर आपसे ज़्यादा चार्ज करता है, don't you feel bad? Be honest. And the answer was so beautiful, and that inspired me so much, and I really want to share with you. This is a great platform.
that he said that I feel so great, I feel so excited, I feel so that this is an opportunity, because that person is setting a benchmark for me, or maybe a market value. If he's charging X crores, I can also charge, because now this is a level, this is a market value that person is creating. So this is all about mindset, nothing else. So ये बहुत छोटा सा मैसेज था जो मैं आप सबको देना चाहती थी, बिकॉज जाने अनजाने आप ऐसी फीलिंग्स आपके दिमाग में आ जाती हैं, बिकॉज कोई आपसे अच्छा कर रहा होगा, कोई आपसे अच्छा नहीं कर रहा होगा. तो स्पेशली व्हेन यू लुक somebody who is doing better than you, after this whole watching my video, I really want you to just try this one mind shift, and how amazingly this works. So this was the message from my side, and I also wanted to thank you all. इतने छोटे से टाइम में, it's a family of 8,000 followers. I was trying to come weekly with some great message for you. ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. I really loved it, wherein I'm sharing my message with all of you. और कुछ नहीं पूछ पाते होंगे क्वेश्चंस, तो उनको भी ये आंसर आ जाता है. अगर आप लोगों के भी कुछ क्वेश्चंस है विच यू रियली वांट मी टू आंसर व्हेनेवर आई कम लाइव नेक्स्ट, तो आप प्लीज़ मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को. आई विल डेफिनेटली गोइंग टू एड्रेस ऑल दोज क्वेश्चंस हियर. और इफ़ यू वांट मी टू टेक along on your success journey, or you want me to help you come your dream into reality, so I have a very beautiful plan, which is a program, I would say, which called Mindset Mastery, and I'm keep posting my results on Facebook as well. You can also be part of that, and for the process is, I'm just wanted to share with you, because some people might confuse कि कैसे हमें आपको join करना है. तो you just need to book a one-on-one clarity call with me, and I'll be there. We'll fix up a time. It's going to be a 45 minutes clarity call, wherein I'm going to understand your requirement, your challenges in detail, and basis that I will customize that mindset mastery program specially for you, and make sure that this program is going to work for you. And I always say this is the program which ensures 10 years of success in 1 year, because it is all about mindset, and my program is specially catered that problem to change your mindset and help you to take charge of your life, rather being in the victim mode, go to the taking charge of your life mode. So quickly, for another couple of minutes, I'm here. If you have any question, you can ask me. Otherwise, we'll sign off. So Dilip is saying true. Yes, Dilip, it's really true. Anybody else, any question, anything which you want to ask me, I'm here for 5 minutes. 4 minutes I'm here. So I think we have Pankaj here, we have Dilip here, we have Prashant. So thank you so much everyone for watching me. ये वीडियो फेसबुक पे जाने वाली है, अभी लाइव है, फिर आप उसे बाद में भी देख सकते हैं. कोई क्वेश्चन आपका हो, डोंट हेजिटेट टू रीच आउट टू मी on message. You can directly message me and reach out to me for your any question with respect to growth, mindset, transformation, performance. I will surely going to help you in best of my capacity. So thank you so much once again for showering so much love and blessings. Thank you. Namaskar everyone. Thank you.